तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और साइन भाई ये आप शुरुआत करें इसको। कहीं भी पढ़ लेते हैं। Yeah. So, good evening and good morning, both. And तो इसका परसों ही जो है one of the members suggested that we should meet it क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे थे. Though we try to answer those questions and we take time because all are in different work. तो सबसे पहले तो ये है कि as we all know that there was one question. Basically we start with those also because अभी एक question था कि how many non-contiguous land parcel are being bought and what percentage of this is going to register and what is the status of other land parcel. और उसी से एक जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था कि अगर हम 40 दिन में ये इसको रजिस्टर नहीं कराएंगे तो पांचों को तो क्या होगा उसका, what will happen. तो I suppose everybody has read it, but for the somebody may not have read it because I posted it quite late. So just I am adding those revisiting those points quickly. So what that this 40 days is not for entire 5-acre land. And as we discussed earlier, we decided to not to give any amount as advance to register whole land, parcel of land. We decided to go for the piece of land which we can register with our own money, not as an advance but as a full money of that land. So we had our project is only for will be in 5 acre, but we had identified around 7-acre land, 6.5 acre in sector 14 and around 1.5 acre in sector 13 at 1.4. So these are the land. So from 1.4 we have when we applied for the NOC, we applied in 2 parts. One part is in 0.5 आधा एकड़ का एक 0.8 acre का है, so only because so that we will get time also and will also not be losing money, because if you register entire 1.4 acre, that means this amount will be taken as an advance. So we have to pay for 1.4 acre, the total amount will be around 8 crore. And right now we have around 2 crore only. And for 5 acre, we need 3 crore basically. And to be precise, 3.2 crore. 3 crore 2 lakh. 3 crore 20 lakh basically. 3.21. So that is why we decided to first register half acre. By registering half acre, we will get confidence also. We will have an own land will there, and then the remaining 0.8 acre, then we will get the NOC in the coming month. We have applied for that also, but we applied later so that we will get the NOC a little bit later, so that we have space to mobilize fund for the payment. The second question was related to that was what is the status of the other land apart from the NOC we have received. So status ये है उसका कि we have not paid any money for those remaining land, but we have agreed, एक agreement है between the landowner and us that this land will be
bought by us in this in 5.5 crore per acre के हिसाब से. So that is the status. We're not paying anything as an advance. हालांकि they are demand that you pay some money so that we'll block it. But we have convinced them that we are not a builder, we're not a company. We have to mobilize fund from our members. So we'll only pay when we will register it. We'll going for the registration. So till now, we have done the what is called due diligence. जो checking होता है different departments, say revenue department, police department, and also through a lawyer. We have already hired a lawyer, and he is working on those critical things from the legal point of view कि कोई इस पे litigation तो नहीं है इस land पे, इस पे कहीं DDA का कोई objection तो नहीं है, या इसमें कोई किसी भी तरह का इस पे problem तो नहीं है. So those things our lawyer is doing that. So the status of remaining land is that we have done the due diligence, we have cross-checked it, but we have not applied for NOC. बीच में अगर कोई सवाल होगा तो प्लीज डू लेट मी नो. एक सवाल मेरा एक क्वेश्चन था. हाँ, सो ये जो लैंड्स है, तो ये अलग अलग जगह पे है और अलग अलग लैंड ओनर्स. राइट. Okay. हाँ, जो लैंड पुलिंग पॉलिसी में क्या, आई हैव शेयर द डॉक्यूमेंट आल्सो, है ना, आई एम आल्सो एक्सप्लेनिंग इट. लैंड पुलिंग पॉलिसी इसीलिए आया था कि यू डोंट हैव टू बाय लैंड टुगेदर. एक है ना, आप सेक्टर इज इम्पोर्टेंट, किस सेक्टर में आप लैंड खरीद रहे हैं. उसी सेक्टर में जैसा फॉर अस सेक्टर 14 इज अ प्राइम थिंग, यू नो, वी आर फोकसिंग. तो इफ यू बाय लैंड इन सेक्टर 14 फ्रॉम एनी पार्ट, so we will be allotted land in sector 14. Okay. And if I think you had also visited that site also, you see there's a whole, you know, it's open space. Open space, exactly. Open space, there is nothing. So but if you see the sectoral plan we had just shared in the WhatsApp group, you see they have shown the road also, they have shown the marketplace also, you know. So we don't know the land we are submitting, that land may be used for the school, or maybe used for the police station, or maybe for the park, but we will given 60% of the total land we will be submitting to a area marked for residential area within that sector. Okay. So जब DDA हमें जब देगा वो एक ही साथ देगा, मतलब एक जगह पे हमें एक साथ देगा वो. Okay. Thank you. So ये सवाल ही था वो लैंड स्टेटस. So I think I have covered those things. वो एक सवाल और था, दोबारा रिपीट हुआ था कि if the entire 5 acre is not being purchased within 40 days, what should we do? So this is a repeat of this question by another person again. So यही है कि we don't have to buy all the 5 acre in 40 days. This 40 days is only for that parcel of land for which we have got NOC. एक सवाल था, I'm just questioning the sawal. I'm not taking the name of who raised this question, but just because this is important for everybody. So एक सवाल था, I'm just trying to highlight that transparency will encourage others to come forward to pay. And we said this earlier also in last meeting, and we said it now also that we do believe that this is a very important thing and it will encourage us. That's why in the last meeting we have agreed, decided, and governing body also passed this resolution that this fiscal year we will sharing 3 documents. एक तो है IT return which we will filing, जो हमने CA से बात किया कि 15 या 16 जून तक he will do that, filing the IT return. Once we will file the IT return, after that the auditor will work on those things and give the audit report. And the third is bank statement. These all are linked. We can cross check कि जो बैंक स्टेटमेंट में है वो ऑडिट रिपोर्ट में है कि नहीं है, जो IT रिटर्न में है. तो दिस 3 document is interlinked.
That's why we have decided to share these things. But only thing is that bank statement will not be shared through email, WhatsApp group, any social media, because this will have names of the member, how much they are paying. So if anybody wants, while they're visiting to that place, we can show the statement, or when we visit the office. So, but other two things we will share through email. All the registered member will get an email with those things, and we also share in our WhatsApp group. Shaheen, one question. Okay. See, bank statement probably need not to be like shared with the members, every individual. Okay. No, we'll not share But it. yes, yes, that's fine. Okay. See, main doubt is like, if you hear from the members, I do not know. You are more in contact with more number of people than I am. But the people have like the impression is that many people are interested, but nobody taking out the money. Okay. So the reason which I felt that people is still not having comfort level where they can come out to open their pockets. Okay. So for that purpose only, okay, either transparency is required. I have that question also. The Okay. next is that question. Go ahead. That question has three parts. One was about the transparency, another was about this thing, the number of, the question is that is that possible to share the number of investor, that is member basically, how many people have paid 100%, how many people have 50% or less than that. So yes, I've written that in the message also. I'm reading from that own message that yes, this is we will share that. I will collect the bank statement, because we do not use the online banking, because of the risk of involve lots of risk, and we don't want to take. So everything we do the manual thing. We go to the bank, take the bank statement. So we have those things. So yes, we will share this statement within. We'll collect the in bank statement, and we'll share that percentage of investor, rather member. I will say member, not investor, because they are a member. They are not have paid this thing. Recently, we have received around from 4 or 5 people have paid in last 2 days. So we don't have that thing. So yes, in 2 weeks time, we will just calculate all those things, and we will share to the. But again, it will share to the email to the registered members, not on the public platform. All the members who are registered, who has paid 21,000 rupees, we will email that how many have. We not share the name. We just say X% has paid 100%, X number has paid Y number has paid the 50%, and Z number has paid less than 50%. We will say this thing, but we will not share the name. I think that is शाहीन भाई ये सही है. I think मतलब ट्रांसपेरेंसी के मतलब वो नहीं है कि हमें जानना है एग्जैक्टली कौन किसने कितना पे किया, बट मोटा मोटी एक आइडिया अगर हो. और ये भी मतलब ट्रांसपेरेंसी का और भी एक इश्यू है कि ये जो 40 डेज में पे करना है, आपको पता होगा कि मतलब हम पे कर सकते हैं कि नहीं. तो वो अगर हम एटलीस्ट जनरल टर्म्स में हमें बता दे तो एक होता है ना कि ठीक है बढ़ रहा है आगे. दैट्स इट. इसमें शाहीन भाई मेरा भी एक क्वेश्चन और सजेशन था कि अब चूंकि इसमें लग रहा है कि लोगों को भरोसा या उस तरह का चीज जो है, जो एक रिस्क लेना होता है, वो अभी भी लोग जो है हिचक रहे हैं. और ये ऐसा है कि ये स्टेट ऑफ माइंड भी होता है लोगों का, अपना पर्सनालिटी इशू भी होता है. तो मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए कि ये इंटरेस्ट ही होता रहे साल 2 साल 3 साल तक, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म ये निकालना होगा कि जो भी मनी का कलेक्शन हो रहा है, जो कि रिस्क लेके अपना ये कर रहे हैं लोग पार्टिसिपेट,
तो अगर थ्रेशोल्ड नहीं भी पहुंचे 120 लोगों का जो आपने किया हुआ है 5 एकड़ वाला, तो एलुमनाई कनेक्ट ने ऐसा सोचा है कि जितने भी लोग हों, लास्ट में जो भी लैंड पार्सल वो होगा, उन लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा। मतलब Yes. एक टाइम भी तो होता है ना, मतलब आपने पिछले साल किया था 1.5 साल का ये लैंड एक्विजिशन वाला जो प्लानिंग था, लास्ट ईयर का ही था, तो साल भर हो गया। तो अब आज फिर से आप अगर स्टार्ट करें तो फिर अगले 2 साल का बनाए, तो ये तो मतलब मूविंग द गोल पोस्ट टाइप से हो गया ना। तो इसमें जो है थोड़ा एलुमनाई कनेक्ट को सोचना पड़ेगा, एक फर्म डिसीजन पे आना पड़ेगा कि एक टाइमलाइन आप हार्ड टाइमलाइन सेट कीजिए। इफ यू आर नॉट विलिंग टू टेक द रिस्क, so you can stay outside. Even if we don't reach the minimum required number to 5 acre का जो होता है, लेकिन those who are interested, who have come forward, we should have some way to, you know, whatever land we acquire with the money that we get from the members willing to take the risk, we can, you know, distribute in a proportional way or in a. Yeah. So there was 2 questions. One from Dr. Neena Banerjee and another from Dr. Nandan Jha. So I respond to first to Neena Banerjee, but that's a smaller question. So नीना जी का ये था कि अगर 40 days में जो हमें पे करना है, do we have that you know capacity? I mean, वो उतना है क्या हमारे पास? So yes, right now we have said earlier that we have around 2 crore, and to get registered this parcel of land for which we have received NOC, this is 0.58 acre land, मतलब आधा एकड़ है। और इसको रजिस्टर्ड करने के लिए we will require 3 crore, 3.21 crore, and so that means we are lacking 1 crore only, 1.2 crore you can say, and we have 40 days, and today itself we 4 you know member have called me that they are going to pay. Please give me the how to online transfer things, though we have already shared, but I'm again share with you. So for Neena ji's question, yes, we can pay in 40 days and register this piece of land. Now the second question is from Dr. Nandan Jha. एक तो ये कह रहे हैं कि what about if 120 लोन, 120 वो 112 है, इसे राउंड ठीक है, राउंड पे 120, what happen if there is no 120 people? So ये 5 एकड़ जो है, इसमें क्या DDA में क्या है, is not compulsory to go for 5 acre. 5 acre में क्या है, you will get your own, you know, identity, a JNU alumni. If you're less than 5 acre, they will also, you can also participate in that land pooling policy. So we opted for 5 acre because, you know, just for the, you know, we will get a bigger open space, and we have our own gated, you know, things. So that is why we decided for 5 acre. But if you will not get member, you know, a required number of member, then we can go for lesser also. So yes, I agree with you. We will take decision. I have fixed August 2023 that till August those will be paying. Then in the first phase we will close in 2000 August. Those who are paying, they will be included in this phase. Then if there are more people you want to involve, we will think over. We will not decide yes or no.
But ये yes, सही आइडिया है, ये सही आइडिया है। आई थिंक जो हम लोग जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत सीरियसली इसको ले रहे हैं, अगर हमें वो आश्वासन मिले कि एक एटलीस्ट फ्लैट बनेगा, बाकी पूरा कैंपस ना बने, बाकी लोग नहीं आए, फिर भी हमें वो दिखना चाहिए। बट ये स्ट्रैटेजी मुझे सही लगा। but people will come. I am very because I have been this because मैं इससे शुरू से जुड़ा हूँ, तो पिछले 1 साल में I can see the way people are responding now, है ना? So I am very much hopeful that we will get required number, that 112 members for the 5 acre. But in that, if you're not getting, we will go for the smaller thing. Okay, Shaheen, one question. Okay, see, this 0.8 is 14 days or 40 days? 40. 40. हाँ, Okay. वो एनओसी के बाद ना, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है कि एनओसी जो है आपका 40 दिन तक ही वो होता है, देन वी हैव टू टेक अगेन एनओसी. Okay, see, I have multiple question on that. Okay, first of all, this 0.8 acre land, getting registered is extremely important. Okay, for the benefit of the community and all of us getting confidence. Okay, in the project. That's a first step, which will be extremely important. I guess like that much money it will be possible to collect from the members, right? Right. Okay. The second question I have, let's suppose in the worst case scenario, okay, I do not know how much interest people are showing and how much they are interested in terms of taking out the money. But let's suppose this you just get this 0.8 and further it takes you time to convince the members. Okay, you're not able to collect for the 5 acre. Okay, partial amount you collect. So you are saying you can go for any amount of land, whatever acquired within a certain time frame, which will be decided by the the members. Okay, that let's suppose another 6 months we will wait. If nobody comes, then whatever land we have, we can go ahead with that and we'll close it, for example. Yeah. No, yeah. As for the DDA norms, as for the land pooling regulation, DDA policy regulation generally is called land pooling policy. So we are working in land pooling regulation 2018. So as per the land pooling regulation, a smaller land parcel can also be part of the land pooling regulation. The only thing, it will not have the identity if it is lesser than 5 acre. That's what you are saying. Yeah. We will not have. Then we have to. They will give anyway. That identity which we want to have a gated one. And then for that we have to be 5 acre minimum. Okay. One more thing. I understood all this land what we are buying from the respective farmers or whomsoever. So all due diligence in terms of EC certificate, certification, or whatever else is required, layout, all those things, we are already doing through a lawyer because we are involving the lawyer, right? Right. But do we know what will be the requirement of the DDA, okay, or the Delhi government whenever it is handed over to them? Let's suppose today there are requirement of 10 documents when we buy, but that is our own due diligence to buy. I need these 10 documents from the seller, so that I'm sure that there are not litigation XYZ verification. The lawyer would have given the list. But let's suppose tomorrow DDA wants 11th paper. Okay, do we know that list so that we can get it when we register or before that from the seller? Yeah, you got my point, right? Yeah, the lawyer is dealing in the land processing. It's not the land ka hi lawyer hai ye registration ka, cases ka, sara. So he has all that checklist which we will require. No, Shaheen. See, one is I buy a land from you, okay, and the lawyer knows when there is a land, a transaction between two individuals, he is expert into that. He is ensuring that. Okay, perfectly fine. I'm saying tomorrow when I hand it over to the DDA, okay, or the Delhi government, whoever the authority taking it from us, right? He will also have their own checklist. I need XYZ documents. Okay. Yeah. So unless those lists does not match with our list, later on we can have problem if they have some. No, we have that is also. We have that's that what I'm also. asking. Yeah, we have that. Neeraj, the person who is working with us,
we have already shared those things. We again share. We have those. What are the things that require in the to participate in the land pooling regulation, land pooling policy? We have that list, and the most important is that what you have, that land has to be part of that sector. So we are getting checked that this is in that sector. This has to be registered in the name of that D, which they call it development entity. They don't call it land owner या उससे, they call it D, development entity. तो वो development entity के नाम से वो land होना चाहिए. So we have that list. But thank you for asking this question. Okay, so I ask you a direct question simply. Okay, let's suppose Yeah. tomorrow, after handing it over to DDA, okay, some litigation comes on that land. DDA will simply wash up his hand, will say, look, I don't need this land because there's a problem with your land, right? So all of us are out of that sector, right? Not even only sector, losing money also. Okay. That all we are cross checking. You know, there is no litigation. That's what I'm saying. That is why the law is there. Okay. That's why we are paying. No, I'm ignorant. That's why this question is coming. I'm asking I'm you. sharing that. Thanks for sharing. It's a good question for the general people. Yes, that's why we have hired the lawyer. He's checking is there any kind of litigation on that. We have contacted the person in the SBI, State Bank of India. I've shared earlier also. He's checking through the what SBI अगर लोन देना होता है तो वो क्या-क्या चीज चेक करती है. So we are doing multiple cross check before going further, because this land has been identified as 6-7 months if you remember 6-7 महीना पहले. That's why it took so much time to come to that conclusion. But of course, yes, it's good that you raise question because others will be benefited from these questions. No, see, my whole intention is saving my own money as well as others investors who are involved into it. Okay, that's the whole intention. And whatever question comes with whatever experience and things happen, that based on that I'm asking the question. I hope nobody will feel bad that I'm questioning the questions members. Questions are always to welcome. Save my own money. Right. Questions are always welcome. Okay, thank you. The meeting is only for that. कमेंट था Yeah. कि अब जैसे ये एक बड़ा इशू है कि कॉन्फिडेंस, मेंबर्स को कॉन्फिडेंस होगा, तो ये आर्गुमेंट जो है मुझे लगता है कि बड़ा फ्लिमजी बेस पे है ये. अब मान लीजिए 10% लोग आगे आए हैं और उनसे करके अगर ये 0.58 एकर्स एक्वायर कर लेते हैं तो ये 90% मेंबर्स तो बैठ के मतलब उनके लिए ये हो रहा है ना. हम लोग तो जो 10% लोग आगे आए हैं एक तरह से फ्री का सर्विस दे रहे हैं ना उनको, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में लगे हुए हैं ना हम लोग हैं. तो ये तो बड़ा अनफेयर हो गया ना. तो मेरा ये एंग्विश है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट एट ऑल fair to the 10% members who have come forward and believe in this project, but rest 90% or so are still gauging the waters and trying to make up their mind, and so this all. And then the ALC, somehow the leadership is overly optimistic. That's my concern. If past is the measure and indicator of anything, I'm not sure we should be so optimistic. Shaheen, just let me talk on that. Okay, Nandanji, your concern is valid. Okay, but I will say just one word, that it's the responsibility of the head of the family to take along with it every member. So confidence building, I will say, the measure should be taken, okay, by the members, whoever is in the office bearer or in whatever way we can do.
because that's their responsibility also, even though there are people who is standing on the fence, okay, but bringing them inside the fence, okay, I think that measure we should do without thinking that no, why they are standing at the fence and why do we have to put the effort. Being the head of the family, no, whoever is no with the members topmost 5, 6, they should take that measure. In family we have like no all sort of people. बट मुझे मेरा एक सजेशन है, आई थिंक शाहीन भाई ऑलरेडी सेड दैट फेज 1 जो क्लोज कर देना है, एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन कि इसके फेज अगर लोग नहीं आए तो फेज 1 में एटलीस्ट हम लोग मूव कर पाए. वी कैन नॉट बी वेटिंग फॉर एवर, even if let's say they take more, it could be phase 2 for them. So I think that's a good, I think, suggestion idea. That is a good strategy. Yeah. And then in this case, I don't think this family argument is relevant here, Mahfouz bhai. So Nandan ji, आपकी बातें अच्छी हैं, लेकिन ये देखिए फैमिली में भी ये है ना, पैसा जो है बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. और ये ऐसा है कि लैंड पार्सल जो भी अभी लीड कर रहे हैं वो तो सब मेंबर्स जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है उसी से ना वो आगे बढ़ पाएंगे. वो तो अपने आप से कहीं से मनी जनरेट करके नहीं कर पाएंगे ये चीज को. जो हमारे जैसे ही लोग हैं ना, हमारे आपके जैसे ही लोग हैं, ये भी जो लीड लेके कर रहे हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, तो वो भी तो अपना जो भी उनका उचित शेयर बनता है उस तरह से ही करेंगे. वो तो सबके लिए उस तरह से नहीं कर पाएंगे ना, तो मेंबर्स को ही आगे आना पड़ेगा. और उन्हीं के पैसे से ये कर पाएंगे सब काम. सॉरी नंदन जी, जस्ट टू नो इंटरप्ट यू. ओके, मेरे कहने का मतलब क्या है ना कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नो, व्हाई शुड आई पुश इट. But the thing is that if some member needs certain information, certain documents for him to take a decision, because आपका डिसीजन लेने का पैरामीटर अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, शाइन का अलग हो सकता है, और मिस्टर XYZ का अलग हो सकता है, राइट? नो, so if that is within the parameter where the ALC committee can extend their help to build the confidence in the member, I think that should be done. Okay, that should be done. But at the same time, in that matter, just a minute. You, yeah. And I okay. believe the leadership of the leadership team is very prompt in sharing all the exactly. ये एक एरिया मैं बोलूंगी कि मतलब ALC ने बहुत पेपर वर्क शेयर किया. Lian, and they are very prompt in putting out all the information there. They are put loads of information on the official Facebook page, and even in this WhatsApp chat group that they have created. But you can still shoot them questions. I'm sure they will be very, very prompt in answering your queries. Okay. See, at the same time, the LC has to be very firm, but this deadline is deadline. Okay, one has to respect. If you do not respect, you're out. That has to be taken. But till then, okay, any need of the individual members, I think that should be catered. First thing. Second thing, definitely there is no doubt, on ALC members. There is no question on that. We are not talking at all about that. We are just talking that in terms of processes, how to strengthen, in terms of how to save our own investment. Okay, in whatever way we can, each one of us can contribute. I understand, like none of the ALC members are expert into civil and land revenue kind of things. Okay, these matters. So definitely individuals' contribution in terms of questioning, okay, in terms of providing input, okay, that will help. That's the whole purpose. And again, I will say, like a confidence building measure is required and it should be done. Rest ALC members knows better. Sure. Yeah, thank you. Actually, you have getting messages from somebody that they are not able to hear. I hope I've got 2% sent text message that. So I hope others are listening.
सबको आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल। Okay, हाँ okay. भैया। Because I got chat message that not able to hear the. Maybe then it's problem in their network. Okay. So तो यहाँ और कोई किसी का सवाल है? Then I will just go through the other thing. नहीं, मैं जस्ट Chat. एक ही बात बोलूंगी, शाहीन भाई आपने इतना डॉक्यूमेंट शेयर किया और यू टेक सो मच एफर्ट टू रियली आंसर all the questions. I mean, I can completely understand how much time it would take. So a big thank you for really answering these questions, finding the documents, then sharing it. I mean, it's a lot of work, but I think at least I know that you have done a lot for the group. Thank you. Shine, one question. All these, whatever we have posted on the WhatsApp, that being documented somewhere, being kept at some place, right? No. Yeah. Because see, WhatsApp chat, no, it's a chat. Okay. No, But I have there has to uploaded be all those in the Facebook upload document होता ना? The group, जो group हम लोग का है Facebook पे, तो there is a space there, upload document. तो group में. can't it be kept in the Google Drive and share? Because see, Facebook. Yeah, I can do that. I can do that. Okay, nobody accesses the Facebook. No, I access. ऐसा वो और कुछ हो गया अब. No, I will do that. I will make Google Drive पे. I will create Google Drive and then Okay. share it. Yeah, good suggestion. क्योंकि बार-बार हमें जो है ना उसको कोड करना पड़ता है. Repeated question. So नहीं, that way like no anybody. ये तो वेबसाइट भी है ना अपना तो. हाँ, वेबसाइट हाँ वहाँ पे डाल देंगे हम. हाँ वही सबसे अच्छा जगह है. हाँ. If anybody comes with a question, no, first reference, go to the FAQ question paper. Okay. Just share the link. If you do not get any answer from that page, then you come as, if that means your question will be new. Yeah. Rather than taking pain again and again sharing the same thing, right? लेकिन तुम खुद ही बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हो. मैं तो पूछूंगा यार, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आंसर होने के बावजूद भी. मैं नहीं, I have not seen the land. Okay, now I'm planning sometime by this month end. साइन भाई. हाँ. क्या संजय जी? मैं ये कहना चाहूंगा, महफूज भाई जो है बार-बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कई बार जवाब इनको दिया जा चुका है, हालांकि इससे हमें परेशानी नहीं होती है. लास्ट टाइम मैं एक डीआईजी थे वहाँ साउथ में, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनसे मैं फोन पर बात कर रहा था, 45 मिनट तक बातचीत हुई थी. उन्होंने भी यही कहा था कि आप लोग का पेशेंस जो है बड़ा काबिले तारीफ है, कि आपको 45 मिनट से हम आपको क्वेश्चंस, वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे वो, तो उनका पूरा अंदाज ही पुलिसिया अंदाज था, और बार-बार कह भी रहे थे कि भाई हमारे पुलिसिया अंदाज से आप परेशान मत होइएगा. वो नंदन भाई का अच्छा सजेशन है कि जो हमारा नंदन भाई का तो अच्छा सजेशन है. वो वेबसाइट पे सारा डाल देंगे वो. नहीं, वो तो मैं सब जॉट डाउन कर रहा हूँ. हाँ, we put all this on website. But ये frequently asked questions जो FAQ का जो सजेशन है, I think वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी बन गया है. मतलब बार-बार एक्सप्लेन नहीं करना. से इसी को अपडेट कर देंगे. But Shaheen, you have to agree that in that FAQ 50% question is mine only, right? For last 5 years. Yes. Agree, no? Yes. Thank you. So there is one question. वो उनका है, नाम छोड़िए. हाँ, ये वन क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में था. एक क्वेश्चन नंबर 8 है in the process. I'm just reading question. I have been watching with interest the progress of the society and the land related matters of our friends have been keenly visiting the site of the proposed development too. In my view, it is important to remember that in the land pooling system, the final allotted site may be different than the land given to the DDA. It will depend on the mass. So that we have already answered. So I'm quitting this question. है ना, ये वो तो हम समझ गया है. इनका second part है
as per my information, the land pooling policy is still not final. ये इनका सवाल है. So इनका क्या है कि ये फाइनल है ये. The land pooling policy जो है एक्चुअली क्या है, लैंड पूलिंग पॉलिसी फाइनल हो गया 2013 में ही. तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसको अपना रूल्स रेगुलेशन मानना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को लागू करने के लिए. So in the questions and answers, I have shared the land pooling policy which was used by the government of Andhra Pradesh to develop its new capital city Amravati, and that was in 2015. So the land pooling policy is final. In Delhi, it was finalized in 2018 October. And I have given the link to download that paper, and I also updated that gazette में notify किया था notification. I have also updated that thing. And the DDA on February 28, 2023. I mean, in February 28, 2023, approved the draft of the Delhi master plan. ये भी pass हो गया है. And then because land pooling policy and master plan are linked, so the answer to that question is that it has been finalized. There must be some confusion of understanding. समझ में थोड़ा वो होगा. वो क्या है कि implementation और policy finalization में थोड़ा फर्क है. हो सकता है जिनका सवाल है वो ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है. तो फॉर इम्प्लीमेंटेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर किया था वो अपडेटेड. तो इसमें क्या है, तो जो डीडीए में क्या है कि कोई किसी भी सेक्टर में जब 70% लैंड डीडीए को जाएगा तो उस सेक्टर में काम होना शुरू होगा. तो प्रोबेबली दैट मेंबर वाज आस्किंग अबाउट दैट. तो उसी के लिए मैंने अपलोड किया था कि एज पर द आई एम शेयरिंग दिस शीट. ये कैसे शेयर करते हैं, एक शीट में शेयर कर रहा हूं. ये दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है. हाँ. यस. तो जो वो कह रहे थे वो शायद इसकी बात कर रहे हैं. ये जो है अक्टूबर का स्टेटस है. एक लेफ्ट साइड में एक सेक्टर है, टोटल एरिया इन दैट सेक्टर दिया हुआ है कितना है. वैकेंट एरिया है, वैकेंट एरिया में जो पब्लिक की जो होगी, जो सरकारी होगी वो है. एंड टेंटेटिव लैंड पूलिंग कितना उसमें लैंड पूलिंग जा चुका है, एंड टेंटेटिव परसेंटेज और कितना परसेंटेज उनका आ चुका है. वहां डेट देखें, डेट दिया. जो लास्ट कॉलम है उसमें देखिए, इसमें लिखा टेंटेटिव परसेंटेज ऑफ लैंड पूलिंग इन द सेक्टर 31/10/2022. यानी ये स्टेटस जो है अक्टूबर 2022 का है, एंड वी आर नाउ इन 2003. तो ये बड़ा होगा. तो आप इसमें देखेंगे सेक्टर 14 में देखेंगे तो ये हमारा 65% लैंड जो ऑलरेडी जो है डीडीए के पास लैंड पूलिंग के लिए ऑलरेडी सबमिट किया जा चुका है. इसका जो है डीडीए के ये दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम डीडीए वेबसाइट. तो आप डीडीए पे जाके क्रॉस चेक भी किया जा सकता है इसको, है ना. तो ये और ये तो पॉलिसी है कि जिस सेक्टर में 70% सबमिट हो जाएगा वहां पे ये लैंड पूलिंग काम शुरू हो जाएगा. ये सो जैसे सेक्टर 3 देखेंगे तो हम 81% हो गया. तो यहाँ पर दे हैव स्टार्टेड कंसोर्टियम. Recent है which is not published in the DDA. They will be publishing soon. So we have come to that in sector 14, 68% land has been submitted. So under 2%, we will be, the land pooling policy will start working in sector 14. Any question? नहीं, ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन. We are very close to the 70%.
हाँ, ये 65% है, 2 अक्टूबर का है, ये 2022 का। ये दिसंबर में अभी जो हमारे पास डेटा है वो दिसंबर तक का है, दिसंबर 2022 का है। उसमें हमारा 68% हो गया था। दिसंबर के बाद दे हैव नॉट अपडेटेड कि कितने लोगों ने सबमिट किया है। बट इनफॉर्मली पीपल सेड दैट वी हैव क्रॉस्ड, बट वी आर, हम यही मान जो ऑफिशियल है दिसंबर तक का कि 68% हम लोग हम सेक्टर 14 में हो चुका है। तो शाहीन भाई मान लीजिए एक क्वेश्चन है, पता नहीं मतलब क्या हाँ, कैसा क्वेश्चन है, बट ये अगर मान लीजिए फेज 1 का जो हमारा लैंड, मान लीजिए डीडीए हमें फाइनल लैंड दे देता है, कहाँ पे होगा, वहां पे हम लोग अगर नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस में जाए कि कंस्ट्रक्शन शुरू हो फ्लैट का, तो ये जो फेज 2 वाले जो है वो लोग जब आएंगे, उनका जो लैंड वो क्या हमारे साथ होगा, उसका कोई एश्योरेंस है? या क्योंकि कैंपस बनाने के लिए तो बहुत सारा फ्लैट चाहिए, बट मतलब वो नहीं, हाँ दे विल बी गिवन इन द सेम सेक्टर, बट इन सेक्टर 14 आप जहां पे जमीन लेंगे उसी सेक्टर में आपको अलॉट होगा यहाँ पे। सो दैट वी हैव टू नेगोशिएट विद द, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, कि एक साथ मिलेगा नहीं मिलेगा, बट ये है कि अगर हम लोग कोई जवाब नहीं मेरे पास एक्चुअली। हम गेस करना नहीं चाहते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन मुझे अचानक से लगा कि क्वेश्चन अगर राइट है, फेज बट 1 इसके हम ऊपर लोग हमने आगे बढ़ गए, सोचा हो नहीं। सकता इस है हम लोग क्वेश्चन पे आगे हमने बढ़ जो है, जाए। इस क्वेश्चन पे हमने कोई, क्योंकि हम ऐसे ही जवाब नहीं देना चाहते कि, है ना। हाँ नहीं हाँ, हाँ, तो इसका So, जवाब मेरे see, पास नहीं है। basically there may become multiple campus. या That's the one. I mean, the वो सही straightforward. है, फिर भी सही है, क्योंकि हम तो आगे बढ़ सकते हैं ना फेज 1 हाँ, में। हाँ, हाँ, Sorry. नहीं, एक चीज मैं यहाँ बोलना ऐड करना चाहूंगा। अभी हमारा 65% है उस सेक्टर 14 में। अगर ये 68% हो 20% के गया सर, ये हाँ ठीक अक्टूबर है, का ठीक है। है। हाँ, दिसंबर का 68% है। हाँ, अगर ये 70 के पास चला गया तो हो हम्म। सकता है कि लैंड का दाम वहां बढ़ भी जाए। बढ़ेगा, ये तो अभी बढ़ गया हाँ, सर। तो आगे जो आएंगे मेंबर्स, उनको बढ़े हुए रेट पर लैंड लेना पड़ेगा। नहीं, वो तो इसमें हम लोग कुछ नहीं दैट वी ऑलरेडी अनाउंस, सही कर रहे हैं हम, यू राइट। So these were the updates from my side, from ALC side. और कोई और यही है कि अगर स्कैटर्ड ये होता है कैंपस, मान लीजिए बाद में, एक तो जो अभी फेंस में है उनको कॉस्टली पड़ेगा, पहली बात। और दूसरा ये है कि उनका जो सारा कैंपस एक साथ नहीं भी हो सकता, मतलब ये डेफिनेटिव नहीं है कि एक जाएगा, हो भी सकता, नहीं भी सकता उसमें। हाँ, उसमें यह है कि इफ यू हैव लिंक इन द डीडीए हो सकता है। आंसर है ना। हाँ, हाँ। तो ये सब मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्रिटिकल पॉइंट है। तो या मेरे ख्याल से ये 70% क्रॉस कर रहा होगा। आप सही गेस कर रहे हैं साइन भाई। हाँ, क्योंकि 2 महीने डिस्कनेक्ट हो गया वो। डॉक्टर झा जो है डिस्कनेक्ट हो गया। मनोज भाई, नहीं, नंदन जी फिर जुड़ गए हैं लगता है। अच्छा, 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 हाँ, ठीक है। सो और कोई बोल किस, रहा था कि पहुंच 70% से ज्यादा हो गया होगा। हाँ, अब तो 2 महीने में 3% होगा, तो 5-6 महीने में तो डेफिनेटली और ज्यादा हुआ होगा। हाँ, हाँ, तो नहीं ये सही है, मतलब यू राइट। अब तो हो गया होता, बट ये है कि हम वही मांगते हैं जो ऑफिशियली हमें पता है, सो दैट यू नो ऑफिशियली जो है दिसंबर तक 68 हम वही लेके लें, बट यस 70 पार हो गया होगा।
एक साइन भाई, मेरा क्वेश्चन है, हाँ, महफूज भाई ने साइट विजिट किया है या नहीं? वो आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं ये? वो लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। ओ, लास्ट वीक। 3 लोग आ रहे हैं वो लोग। बेंगलोर में है ना वो, इज इन बेंगलोर। तो उनसे उन तो बेंगलोर से 3 लोग आ रहे हैं इस महीना के लास्ट 29 तारीख के पास, जो भी सैटरडे होगा। 29 नहीं, तारीख के अच्छी बाद। बात। हाँ, तो 3 लोग आ रहे हैं वो लोग। हमने फोन किया था उन्होंने मुझको, वी वांट टू हैव अ साइट विजिट। तो ये है। So if there is no question, we should conclude. थैंक यू। शाहीन जी, जी। माफी चाहता हूँ, अभी थोड़ा लेट बोल रहा हूँ। मैंने एक्चुअली ईमेल में 2 सवाल पूछे हुए हैं, या आप उनको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, या फिर मैं यहीं पूछ लेता हूँ आप बता आपसे। दीजिए, यही बता दीजिए। हाँ जी। हाँ, यही पढ़ दीजिए, क्योंकि अच्छा, ईमेल जो है अरिता चेक करती है, अरिता है कि नहीं यहाँ पे अभी। कोई बात नहीं। मेरे हाँ। मेन जो कंसर्न्स हैं, आप हम्म, सवाल मानिए उसको, ये जो भी है, अगर आप उनका जवाब हमें दे तो हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस, जो बात हो रही है वो और मिलेगा। हाँ, हाँ। पहला तो ये है कि अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि सब कुछ जो प्लान है डीडीए का वैसे ही चलेगा, हम्म, और हम भी चाहते हैं, हम सबके सब यही चाहते हैं। हम्म, तो ये है कि अगर बाय चांस वो नहीं होता है, तो जो हम्म, पैसे दे चुके हैं या जो हम्म, मेंबर्स हैं उनके पास लीगल रिकोर्स क्या रहता है, लीगैलिटी क्या है, किस तरह का अग्रीमेंट अभी बन रहा है, और उस अग्रीमेंट का क्या क्या ऐसा है जो, आई मीन से फॉर इंस्टेंस कल को मैं कैंसिल करना चाहूँ क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, हाँ, हाँ, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, हाँ। नो, या उसमें फिर यही है। ये हाँ, अगर किसी और वजह से रुक जाता है या हमारी सोसाइटी रुक जाती है किसी और वजह से, और ये सब होता है, हमने बहुत देखा है ये सब होते हुए, हाँ। तो हमें स्पेसिफिकली एक सेट ऑफ अग्रीमेंट में जिसमें रूल्स हों या एक टर्म्स एंड कंडीशंस जैसा कुछ हो, वो अगर मिल जाए तो शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। हाँ, विल शेयर दैट वन। हमने यही है कि इफ एक तो ये है कि हम लोग बिल्डर के साथ टाई अप नहीं कर रहे हैं। वी आर आवर सेल्फ बिल्डर। तो हम लोग लैंड खरीद रहे हैं खुद, है ना। तो कोई किसी और से एग्रीमेंट नहीं है। हम हमारा, क्योंकि ये जमीन हम लोग अपने नाम से ले रहे हैं। बिल्कुल तो सर, अगर नहीं होता है तो विल सेल आउट मैं बात कर रहा हूँ वो हम्म, बकायदा, मैं ये मान रहा हूँ, मैं एज एन इंडिविजुअल सोसाइटी के साथ एक अग्रीमेंट है मेरा, जो सोसाइटी, हाँ, मैं उस अग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ कि हाँ, टर्म्स एंड हम कंडीशंस में आप हाँ, वो अगस्त आ तक रहे हैं हम इतना तो। कर रहे हैं, दिसंबर तक हाँ, इतना कर रहे हैं, अगर आप नहीं करते हैं या अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, हम्म, इस तरह की चीजें, नेटी हाँ, ग्रिटी। हाँ, तो जो विड्रॉ कर उसका लिए है, वी हैव ऑलरेडी शेयर उसमें मैं शेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट भी है कि इफ समबडी इज विड्रॉइंग, है ना, तो द ओनली थिंग विच विल रिमेन अन विद अस इज 21,000 रुपीज मेंबरशिप फीस। बाकी द 100% विल बी रिफंडेबल। और बाकी उसी से लिंक्ड है, जो थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, कि अगर हम लोग एक टाइमलाइन लेके नहीं चलते हैं, तो जो भी पे कर रहा है पैसा, उसका पैसा तो अंदर है और वो ब्लॉक्ड है तब तक जब तक पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनता है। हाँ, तो उसको ही कहना कि वी आर नॉट गोइंग फॉर होल 5 एकड़ लैंड। आप सही कर रहे हैं। पहले यह था कि हमने कहा था कि 5 एकड़ पूरा एक साथ करेंगे हम लोग, राइट। लेकिन जो है क्या कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ सजेशन लाइक यू, अभी नंदन जहाँ है ना, ये ले, तो वी हैव डिसाइडेड टू मेक इन 2 phases। अब तक जिनका आ गया है, जो लैंड हमारे पास हो गया है, वी विल गो वी विल गो इन्वॉल्व इन द लैंड पूलिंग पॉलिसी एज ए दैट पार्सल ऑफ लैंड। तो हम लोग पूरा वी विल नॉट बी वेटिंग फॉर 112 मेंबर टू ज्वाइन, which is required for working in 5 acre land. But yes, we are trying to mobilize people to be to join so that हम लोग 5 एकड़ में करें। but that is not the कि हम लोग 5 एकड़ में करें ही करेंगे। अगर नहीं आते तो विल व्हाट एवर वी हैव वी विल गो। उसमें भी वही है कि अगर सब कुछ जैसे प्लान है वो हो जाता है, अगर आप इवन फेज 1 और फेज 2 की भी बात करते हैं तो भी ठीक है, पर जो मैंने पहले बोला, इफ नॉट देन व्हाट वाला जो सवाल है, उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए, अगर लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ठीक है। तो जरूर और आसान होगा सबको पैसे देने में।
ठीक है। आई थिंक या एक ये क्वेश्चन शायद और भी किसी से आया है कि कोई पूछ रहा था कि रिसीट तो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फेज वन एक आंसर आपने दिया था कि जब हम लोग फ्लैट को रजिस्टर करेंगे तब एक लीगल प्रोसेस है जो कि लीगली एक फ्लैट हमारे रजिस्टर होगा, बट इन बिटवीन फॉर एग्जांपल जब फेज वन के कंप्लीशन जब हो जाए आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने फेज वन में कंफर्म है, तो उनके साथ कोई एग्रीमेंट बन सकता है कि विच इज लीगली वायबल, जो कि आई थिंक रमेश जी भी शायद पूछ रहे हैं रिलेटेड टू दैट। ठीक है। इसके अभी तो हम लोग वही जो रिसीप्ट जो वी आर रिसीविंग रिसीप्ट, बट यस वी कैन डू सॉर्ट ऑफ एमओयू, बट वी हैव टू कंसल्ट आवर लॉयर, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को जो रमेश जी का है लीगल बाइंडिंग कैसे रहेगा, इसको जो है हाउ वी कैन डू इट एज ए अलुमनी कनेक्ट एंड द मेंबर, यही ना रमेश जी? बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए ट्रस्ट तो ऑब्वियसली आप लोगों में बहुत है, मैं भी 2016 से मेंबर हूँ। ट्रस्ट का क्वेश्चन नहीं है यहाँ, क्वेश्चन अल्टीमेटली आ जाता है पेपर वर्क का। हाँ, तो मैं रहूं ना रहूं इस प्रोजेक्ट में मुझे नहीं पता, कल को मुझे कुछ हो जाए तो वहां पे ऑप्शन होना चाहिए कि मेरा नॉमिनी कौन है। आप ना रहे, सोसाइटी में कोई और मेंबर ना रहे, लेकिन सोसाइटी और मेंबर्स दोनों अपनी जगह बने रहे लीगली। हाँ ना। हाँ, ये द सेकंड क्वेश्चन आपने नॉमिनी का, तो उसमें है प्रोविजन मेंबरशिप में, फॉर्म में है। पुराने फॉर्म में जब हमने लिया था उस टाइम मेरे ख्याल से कुछ नहीं था, बट अच्छा ठीक, तो वी हैव लर्न। अच्छा, तो हम आपको नया वाला फॉर्म भेज देंगे हम आपको। ठीक है। शाहीन भाई, कैन यू हियर मी? दिस क्वेश्चन एक्सपेक्ट हम लोग बाद में जोड़े, सही कह रहे हैं, पुराने में नहीं था ये। हेलो। यस। हाँ शाहीन भाई जी एक मिनट जरा, रमेश जी से कंप्लीट हो जाए कन्वर्सेशन। ठीक। रमेश जी कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाए। कंसर्न मेरा और है, और वो पहले भी मैंने आपसे इंडिविजुअल बेसिस पे बात की थी कि जो कोर कमेटी मेंबर्स है, पीएमसी मेंबर्स हैं, उनको जो बेनिफिट्स दिए गए थे मुझे वो एक्सेसिव लगे। अब बाकियों का क्या ओपिनियन है मुझे नहीं मालूम, बट मेरे हिसाब से इतना ज्यादा उनको जो दिया जा रहा है बेनिफिट वो ज्यादा, दैट्स माय ओपिनियन। आई वांटेड टू पुट इट आउट देयर फॉर एवरीबॉडी टू थिंक अबाउट, दैट्स इट। बाकी अब आगे बढ़ा दीजिए आप कन्वर्सेशन। अदर्स में मैं क्या करूं, मैं वी हैव डिसाइडेड, तो अदर्स में शेयर देयर थिंग, बिकॉज़ आई थिंक नंदन का कुछ आइडियाज था, बट आई डोंट नो इफ ही रिमेंबर्स दोस। उनको ये था कि 50% in the land and 50% during the construction, not not 100%, the 50%. That 50% also in the part. नंदन भाई पहले बोल रहे थे कि it should not be in the land only, but the total 50% will be some part in the land, some part in the construction, but 50%, yeah. If I remember, वो जो फेज वन के एंड में जब एग्रीमेंट अगर कोई लीगली बने तब अगर वो थोड़ा सोचने का भी टाइम मिलेगा आप लोगों को भी। No, तो I will उस डॉक्यूमेंट में अगर लिखा रहे तो tomorrow morning I will share this question with the lawyer जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, and we'll ask him to come with the such document. And I agree, I mean it's a good question. I mean we will have, because पहले भी किसी ने क्वेश्चन किया था इस तरह से, so yeah विनोद जी, हाँ बताइए। हेलो। हाँ सुन पा, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आप कह रहे थे ना कि जितना लैंड हो पाएगा उतना करेंगे, बट डीडी का तो मिनिमम 5 एकर्स का प्रिंसिपल है। नहीं मिनिमम 5 एकड़ नहीं हो, 5 एकड़ मींस यू हैव आवर ओन एंटिटी। मैंने आज शेयर तो किया आपको, अभी जो चेंज किया ना अपने नाउंस में। अच्छा, आज का मैंने नहीं देखा, एक वेट थोड़ा सा बिजी मैंने उसमें चेंज किया, उन्होंने लिखा है कि छोटे स्मॉल फार्मर्स कैन आल्सो ज्वाइन। कुछ मिनिमम तो होगा ना उसमें? मिनिमम तो ऐसा उसमें नहीं लिया उन्होंने, कहा स्मॉल फार्मर। पहले ये था कि 5 एकड़ था, नाउ दे हैव कम आउट, क्योंकि बहुत सारे छोटे लैंड होल्डर्स है, those were not joining hand with other, and they are not participating because they don't have the, in that case हमारा नंबर ऑफ फ्लैट्स कम हो जाएगा ना? हाँ, फिर हमारा 112 से कम हो जाएगा, बट आई स्टिल, मुझे लगता है कि 112 कर लेंगे हम लोग। आई एम स्टिल होपफुल। नंदन भाई को लगेगा कि शायद तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बट नहीं एक्चुअली एक बार फर्स्ट गियर में गाड़ी लग जाए ना तो फोर्थ आने में टाइम नहीं लगेगा। आपको रियलिस्टिक ये कर रहा हूं मैं, नहीं सही है, मतलब
आपका ऑप्टिमिज्म भी सही है, लेकिन मतलब चलिए हम दोनों I'm not questioning Nandan bhai, I'm not questioning you. It's just a joke. I'm not questioning you. Just I said. अच्छा शाहिद जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ये लास्ट डेट क्या रखा है अभी, वो जो 40 डेज का आप बता रहे थे उसका लास्ट डेट क्या है? ये 6 तारीख से शुरू हुआ है। ओके, मतलब 15 जुलाई तक हमें कर देना है ना? हाँ। हाँ, मैं अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, बच्चों को छुट्टियां चल रही है, तो विद इन 2-3 जुलाई आई विल गिव यू द चेक। ओके, ठीक है है, ना? ठीक है। ओके, बाकी का देखते हैं। शाहीन भाई, आप फेज 1 का अच्छे से अनाउंस कर दीजिए डेडलाइन सबको। वन हो जाएगा ना, तो आगे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा लोगों में। हाँ, राइट। सो संजय, लियान, you there? लियान, are you there? दिख तो रहे हैं। Yes, I am there. I am listening to the conversation. So मुझे लगता है कि अगर कोई सवाल और नहीं है तो वी कैन, ये खान अफजल के नाम से है, ये अफजल भाई वही हैं क्या जो कोरिया वाले हैं? खान अफजल के नाम से एक है मेंबर। हेलो, खान अफजल भाई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या कुछ, या अगर कोरिया में है तो बहुत रात हो गया होगा, 12 बज गया होगा। Anyway, so if there is no question, I think Lian, you can thank and conclude. Yeah, I'll propose the vote of thanks. Thank you so much, dear members, for joining late evening and early morning, I think, in the West, and also late night. If as how Sahin Bhai has rightly said, if Khan Afzal is in from Korea, then abhi to wo raat ka 12 baje honge. We intend to take this with utmost sincerity and honesty in the best. We are also very, very honest in the sense that we are not builders and neither are we brokers. We are all building a home for ourselves, and this is our learning curves. कई बार साहिन भाई है, फिर संजय सर, हम लोग ऐसे सवाल एक दूसरे को पूछते हैं, तो आप लोगों को ये सारा सवाल सुन के तो मुझे लगता है कि ये सारा सवाल तो बहुत ही क्या बोले कि इट्स वेरी टेम, क्योंकि हम एक दूसरे को ऐसे सवाल पूछते हैं क्योंकि संजय सर विल से, I will also say, because we are also working not only in terms of our hard-earned money, but also in terms of very, very precious time, because I worked at a time where I was also very cross between being the caregiver of my father and my mother, whom I lost. So those were very precious times. So those times can never come back. And I have always sacrificed this for our own future, because we all believe that we need a very good society with JNU kind of atmosphere, with like-minded people. And this is our big dreams. And therefore, this kind of critical questioning is very, very important. Not because you don't trust us, not because we don't trust you, but because we need to critically analyze so that we can get the best deal for ourselves. Because we are building a home for all of us, for ourselves. हम सब अपने लिए अपना घर गृहस्थी बना रहे, तो we have to be critically analytical, like in all aspects. And I thank you for taking out time. Looking forward for more questions, for more constructive questions and feedbacks, and your support as always. Thank you so much. Thank you, Lian. Thank you. Thank you, Nina ji. Thank you. Yeah, thank you everyone. Thank you.